So good morning, everyone, and welcome to the morning con call. First, we'll start with technical and derivative updates. So what we have seen from yesterday is that Nifty did have a very volatile session wherein it even breached the 17,200 mark on an intraday basis, but it did manage to see some buying fraction in the last half an hour or hour of trade, and it managed to close above the 17,300 mark. Uh, it was mainly down to the weekly derivative settlement. Even on the sectorial front, what we saw is that Nifty Pharma and Healthcare and Nifty IT managed to close in the green, while banks, media, reality, and oil and gas managed to close in the negative territory. So technically, what we seem to see is that till we hold 17,150 and 17,200 levels on the closing basis, then we might have this positive momentum to continue going forward, and buy on dips strategy should be adopted, while immediate resistance for the index is near 17,400 and 17,500 odd marks. If we manage to close above 17,400 or 500 levels, then another dash towards 17,800 cannot be ruled out. But any close below 17,150 shall bring about a loss in momentum on the upside, and we might have some corrective phase which can take the index to 16,800, 16,600 levels. Even on the bank nifty front, yesterday it did trade 3 days low, wherein it managed to trade 37 below 37,300 mark, but a late recovery managed to the index to close above the 37,700 mark. When the view remains same for bank nifty, till we don't close below 37,000 mark, the buy on dip strategy should be adopted, and on the higher side we expect 38,500 and 39,000 going forward, but any close below 37,000 should ring the alarm bells for the positional traders. Even on the derivative front, what we have seen is that Nifty futures yesterday did show some short build-up to the tune of 3%. That is addition of 0.33 million shares. With that, the total outstanding position now stands at 11.87 million shares. Even the PCR OI saw a sharp downtick, wherein it closed at 1.03 as compared to its previous close of 1.28. Even the put call option distribution suggests that 17,300 and 17,000 strike put saw some addition. So 17,300 is an immediate support, and on the call front, 17,400 and 17,500 strike saw decent addition. So as per the option distribution, the range seems to be 17,000 and 17,500. Even Bank Nifty futures OI now stands at 26.18 lakh shares as against 27.28 lakh shares. This indicates that even some short buildups were seen in the index to the tune of 4%. So both the index have seen some bit of short buildup yesterday. The stock that is in FNO band for today's session is Escort, and on the flow side, yesterday FI did had a net buy figure of 765 crores in the cash market, while DI had a net sell figure of 518 crores. While on the derivative front, the FIs in the index futures, they are a net sell figure of 829 crores. Index option, they are a net buy figure of 1129 crores. Stock futures, they are a net buy figure of 701 crores, while stock option, they are a net buy figure of 163 crores. So all in all, the total position for the FI was 1164 crores. And on the report call, in the derivative report given, we have given buy on ICICI Prudential Life. We can buy the futures in the range of 556 to 560. Stop can be placed at 545. Target is 586. And one thing we need to note is that India VIX has seen a sharp uptick in past 4-5 sessions. It has from 16 odd level, it has risen to almost 19 and a half. So any till it is below 20, it is manageable. But any close about 20 shall bring about
sharp volatility in the market, and both the stop losses could be hit. Even if you're short, the stop might get hit with sharp volatility and swings on either side. So traders need to be very strict with the stop losses and book regular profits as and when they see on the screen. The rise in the VIX is mainly down to the tension between the China and Taiwan. So any news updates with regards to that will keep the markets very volatile. So once again, the traders need to be very careful with the stop losses. So that would be it from my end. I'll pass it over to Bunty sir for further research updates. Over to you, sir. Thank you, Nikunj. Good morning, team. Continuing with the result season. Firstly, on the Manappuram Finance. Manappuram Finance, as we have seen, they have got impacted with the gold loan portfolio with respect to growth as well as with respect to yield on the pressure due to the competitiveness. This quarter, they have both the things have come slightly better. Gold loan portfolio grew by 2% on a sequential basis and up 24% on a YOY basis as competition has come down from the banking part. Overall, AUM growth improved to 24% versus 11% on a low base. On the margin front, there has been an improvement on the yield per se because of the rationalization of low yielding products or low yielding customers, and the yield has improved during this quarter, which reflected in the margin improvement, and they have guided that margin improvement will continue for rest of the year. And also AUM growth or the gold loan portfolio growth have they have guided, they have maintained the guidance of 10% growth for the full year FY23. So that too seems to be positive, but however the still concern with the MFI portfolio, which is a non-gold loan portfolio, still struggling with respect to asset quality front, as also they have reported the loss in that portfolio of 83 million, 8.3 crores. So that needs to be seen if next 2 quarters they are able to manage the MFI portfolio well and the growth continues in the gold loan portfolio along with the improvement in the yield. This stock will have a much better returns as compared to its benchmark. Secondly, Godrej consumer result was in line with our estimate. India business volume growth has declined by 6%, while value growth stood at healthy 12% on a YOY basis, which was driven by continued outperformance in personal care. Personal care revenue grew by 25% on a YOY basis, while home care underperformed. The revenue part in home care declined by 4%, which due to underperformance in household insecticide. In international markets, South Africa outperforms for 8 consecutive quarter, while Indonesia struggles. There was a decline of 8% on a YOY in Indonesia market. Strategic intervention like channel correction, higher media spends, etc., should improve Indonesia business from second quarter FY23 onwards. We remain positive and have a buy rating on the stock with a target price of 1000 rupees. Dabur, if you see, the revenue has grown by 8% on a YOY basis, but more strongly, sequentially, 12% growth was there on a Q1Q basis. However, there was a gross margin contraction as well as EBITDA margin contraction. EBITDA margin declined by 188 bips to 19.3%. On if you see sequentially, EBITDA has grown by 20% on a YOY basis to 543 crores, and similarly, PAT growth was around 16% on a Q1Q basis at 441 crores. So overall business result was in line with our expectation. If you see the business part, India business has grew by 10% on a YOY basis, while international revenue grew 8% on a CC basis or on a YOY basis. And similarly, volume growth for India business had stood at 5% on a YOY basis. Next is on the Berger Paints. Berger Paints has reported much better or better than the market and our consensus. Revenue grew by 50% on a YOY basis and 17% on a 3-year CAGR basis. That seems to be quite strong. And gross margin, though gross margin has continued to decline, which was for the fifth consecutive quarter. They have reported the decline in the gross margin as such. EBITDA, but due to the better cost efficiency, EBITDA margin has expanded by 145 bips, 140 bips versus
170 bips for Asian Paints, and 120 bips decline for KNPL. PAD growth has been around 75% basis, and company has announced they have appointed Mr. Vikas Sarda as CFO effective 1st October due to retirement of Sarjeet Dasgupta. We remain positive and a buy rating on a Berger Paints. Lastly, Sera has reported its number. The revenue was in line with our estimates, and although profitability was better than our estimates, the revenue grew by 78% on a YoY basis, but there has been a decline on a sequential basis or Q on Q by 10%. EBITDA margin they've reported 15.8%, which is up 630 bips on a YoY basis. Consequently, profit stood at 40 crores, uh, which is uh, which is down by 25% on a sequential basis. That's it from my side. Over to you, Nikunj. Yeah, thank you, Bunty sir, for those updates. We'll continue with the result updates. Max India has reported its Q1 FY23 numbers. They reported a net loss of 4.6465 crores versus a loss of 10.2 crores YOY basis, while revenue came in at 21 came in down by 21% at 43.6 crores YOY, and it was down 13% Q on Q basis. Even they had a EBITDA loss of 0.65 crores versus 0.53 crores YOY and 2.82 crores loss on Q. So it was a bad set of numbers by Max India. Even JB Chemicals Q1 number came in. The net profit came in down by 11% at 105 crores, but it was up to 24% on Q basis. The revenue came in at 784 crores, which was up 30% on the YOY basis and was up 25% on a Q basis. EBITDA came in at 172 crores, up by 6% on YOY basis, while it was up by 42% on a Q basis. And margins were at 22% for the quarter versus 26.9% on a YOY basis and 19.5% on Q basis. Even Gujarat Alkali came in with the Q1 numbers. The net profit came in at 191 crores versus 63.12 crores on YOY basis. The revenue was up 57.5% at 1128 crores against 716 crores on YOY basis. When EBITDA came in at 382 crores versus 126 crores on a YOY basis, and EBITDA margins were at 33.83% versus 17.72% on a YOY basis. So it's a strong set by Gujarat Alkali. Now we'll come to some stocks which will be on focus with their news. So from News Corner, Cipla will be in focus as its UK arm. Cipla EU has acquired an additional 19.22% stake in Cipla Morocco SA for 10 million. Upon the completion of this acquisition, Cipla's EU will hold 79.16% stake in the joint venture company. And please note, Cipla Morocco SA is a joint venture and subsidiary of Cipla EU in Morocco. Then yesterday, BEL had a board meet and they have approved a bonus issue in the ratio of 2:1, that is 2 shares for every 1 share held. Even Adani Ports and SEZ will be in focus as AD Port Group and Adani Ports and SEZ has signed MOU for joint infrastructure investment in Tanzania. Then Dr. Reddy's, there are a couple of news in Dr. Reddy's. The first one is Insta Pharmaceuticals and Dr. Reddy's are in talks to acquire Ethinex Inc. in 200 to $250 million deal as a US-based biotech firm looks to sell a controlling stake. The two Indian pharma companies are competing with a handful of mid-market healthcare-focused private equity fund in the US as a and this is as per the 18 reports. And then Dr. Reddy's has also got a US FDA note for Pamidronate disodium. So these two news will keep Dr. Reddy in focus today. The next one is on NMDC. The company
Mr. Sumit Deb has said that the demerger of the 3 million ton integrated steel plant in Nagar is set to be completed by the second quarter of FY23. But the chairman refused to divulge the details on the the divestment plan of the plant. So this should be positive for the NMDC. Then Happiest Mind Technology has announced the launch of end-to-end security service for healthcare. Then ABB India will be in focus as Andhra Paper Limited deploys ABB India's advanced process control for optimized lime client production. Then Brigade Enterprise has said that state-of-the-art substantial IT sales park Brigade Tech Garden has been inaugurated. Then DCM Sriram has signed an agreement with Renew Power to set up 50 megawatt hybrid wind solution projects for its manufacturing facility in Gujarat, while Axis Bank has terminated its deal. Axis Bank terminates deal to sell entire stake in UK unit to wind up its subsidy. While lastly, REC has sanctioned rupees 22,000 crores for clearing the outstanding dues by the distribution licensees of Jharkhand, Rajasthan, Chhattisgarh, and Jammu and Kashmir. These states will clear dues to generation companies, interstate transmission license, and electricity trading licensees. REC has provided financial assistance under late payment surcharges and related matters rule 2022. So that would be it from my side. I'll pass it over to Shijia madam for further updates. Over to you, ma'am. थैंक यू सर। अगर हम लोग ये कॉल को एक बार हिंदी में कर लेते हैं। कल बहुत सारे कंपनीज के रिजल्ट आए, मनप्पुरम फाइनेंस का भी रिजल्ट नंबर्स आए थे। मनप्पुरम फाइनेंस के जो गोल्ड लोन है वो पोर्टफोलियो है वो ग्रो हो चुका है 1.6% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर 24% से अप हुआ है। तो उनका जो ओवरऑल एयूएम ग्रोथ है वो इम्प्रूव हुआ है 24% से ईयर ऑन ईयर। और उनका जो डिटोरिएशन है असेट क्वालिटी लाइक जीएनपी है वो अभी 7.7 है। ऑल्सो अभी उनका नेट इंटरेस्ट इनकम है वो ग्रो हो चुका है 6.5% ईयर ऑन ईयर। और ओवरऑल अभी स्टॉक के ऊपर बाय रेटिंग है लॉन्ग टर्म के लिए, जो टारगेट प्राइस है वो 140 है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के भी नंबर्स आए थे। नंबर्स जो थे हमारे एस्टिमेट से इनलाइन आए हैं और उनका जो इंडिया का बिजनेस है उसकी जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो डिक्लाइन हो चुकी है 6%। और उनका जो ओवरऑल होम केयर है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है। उनका जो आउट परफॉर्मेंस है वो पर्सनल केयर में है, 24% रेवेन्यू आया है वहां से। और ओवरऑल इंटरनेशनल जो मार्केट है साउथ अफ्रीका वो आउट परफॉर्म कर रहा है कंसेक्यूटिव 8 क्वार्टर से। बट इंडोनेशिया अभी स्ट्रगल कर रहा है। उनका जो वो साइड से जो रेवेन्यू आ रहा है वो 8% डाउन है ईयर ऑन ईयर। सो अभी स्टॉक का जो ईपीएस है वो हम लोगों ने जो सेम एस्टिमेट रखा है। अभी स्टॉक के ऊपर बाय रेटिंग है लॉन्ग टर्म के हिसाब से और जो टारगेट प्राइस है वो 1000 है। डाबर्स के भी नंबर्स आए थे। नंबर्स इनलाइन ही थे। जो रेवेन्यू है वो 8% से ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है, 12% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुआ है, 28,224 मिलियन है। ग्रॉस मार्जिन डिक्लाइन हुआ है 224 बेसिस पॉइंट से। एडजस्टेड पैट रिपोर्ट किया है कंपनी ने 4,414 मिलियन। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 16% से इंक्रीज हुआ है। उनका जो इंडिया का बिजनेस ग्रो है वो 10% से इंक्रीज हुआ है और इंटरनेशनल रेवेन्यू ग्रो हो चुका 8% से। ओवरऑल जो अभी स्टॉक के ऊपर हमारा व्यू पॉजिटिव ही है। बजट के भी नंबर्स आए थे। नंबर्स जो है तो वो हमारा जो एस्टिमेट्स था उससे काफी अच्छे आए। रेवेन्यू जो है वो ग्रो हो चुका है 15% से ईयर ऑन ईयर और उनका 17% ईयर का CAGR है। पैट है वो ग्रो हो चुका है 75% ईयर ऑन ईयर। सो हम लोग अभी बुलिश है बजट पेन के ऊपर पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से और बाय रेटिंग है स्टॉक के ऊपर और टारगेट प्राइस जो है वो 820 है। सेरा सैनिटरी के भी नंबर्स आए थे। रेवेन्यू जो है वो 4 बिलियन है, 78% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। जो उनका बिटा मार्जिन है वो 15.8% से 630 बेसिस पॉइंट से ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। तो नेट प्रॉफिट है वो 0.4 बिलियन से आया है 199
परसेंटेज इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर। रिजल्ट जो था वो हमारे एस्टिमेट से इनलाइन ही आया है। नेक्स्ट अपडेट है ब्रिटानिया के ऊपर। ब्रिटानिया के भी नंबर्स आए थे, जो नंबर्स थे वो हमारे जो एस्टिमेट से उससे बिलो आए हैं। रेवेन्यू ग्रो हो चुका है 9% ईयर ऑन ईयर, और उनका जो वॉल्यूम है वो डिक्लाइन हुआ है 2% से। नेक्स्ट उसी में है कि उनका जो कैपेक्स फ्रंट में देखा जाए तो कंपनी अभी अराउंड 300 करोड़ ईच आप कर रही है तमिलनाडु और उड़ीसा फैक्ट्री में। कंपनी ने इनिशियली अनाउंस किया है कैपेक्स 15 बिलियन फॉर राजनगांव फैसिलिटी, और जो ऑलरेडी इंक्रीज हुआ जो प्राइस है वो 12 to 13 बिलियन है। नेक्स्ट अपडेट है मैक्स इंडिया। मैक्स इंडिया के भी नंबर्स आए थे। कंपनी ने बहुत ही नंबर्स अच्छे नहीं रिपोर्ट किए। जो नेट लॉस है वो 4.65 करोड़ है, और उनका जो रेवेन्यू है वो भी 21% से डाउन हुआ है ईयर ऑन ईयर 43.6 करोड़। उनका EBITDA लॉस भी हुआ है। तो ओवरऑल नंबर्स बहुत ही खराब आया है। जेबी केमिकल के भी नंबर्स आए थे। उनका नेट प्रॉफिट है वो भी डाउन हुआ है 11% से, जो अभी 105 करोड़ है। और उनका जो रेवेन्यू है वो अप है 30% से 784 करोड़ के। उनका जो मार्जिन है वो 22% है वर्सेस 26.9 जो ईयर ऑन ईयर हम लोग कंपेयर करें तो। केमिकल इसमें गुजरात अल्कली और केमिकल्स के नंबर्स आए थे। नेट प्रॉफिट उनका 190.87 करोड़ है। रेवेन्यू अप आया है 57% से 1128 करोड़, और EBITDA मार्जिन भी उनका 33% से इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर। नेक्स्ट अपडेट है सिप्ला के ऊपर। सिप्ला की जो यूके आर्म सिप्ला यूई है वो अक्वायर करने वाली है एडिशनल 19.22 स्टेक्स इन सिप्ला मार्को ऐसे, जो इसकी वैल्यूएशन कॉस्ट है वो $10 मिलियन है। और ये कंप्लीशन हो जाए मतलब उनका जो एक्विजिशन है वो कंप्लीट होने के बाद सिप्ला यूई होल्ड करेगी 79.16% स्टेक इन जीवी कंपनी। और ये सिप्ला माइक्रो ऐसे है जो जॉइंट वेंचर और सब्सिडरी है सिप्ला यूई इन माइक्रो मोरैको में। नेक्स्ट अपडेट है बीएल ने कल जो कंपनी है उन्होंने बोनस के लिए अप्रूवल दे दिया है। जो रेशियो है वो 2:1 है। नेक्स्ट अपडेट है जो इंटरलैस फार्मास्यूटिकल कंपनी है और डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज है, उनका बात चल रहा है अक्वायर करेंगे एथेनेक्स। जो उसकी जो वैल्यूएशन कॉस्ट रहेगी वो $200 to 250 मिलियन है ये डील की। और ये एक यूएस बेस्ड बायोटेक्नोलॉजी फर्म है जो उनका जो कंट्रोलिंग स्टेक है वो बेचने के लिए देख रही है। और ये 2 जो इंडियन फार्मा कंपनीज है वो कम्पीट कर रही है हैंडफुल मिड मार्केट में हेल्थ केयर फोकस जो प्राइवेट इक्विटी फंड है यूएस में, उसमें ये एज पर ईटी रिपोर्ट का सोर्सेस है। और डॉक्टर रेड्डी है उनको यूएसएफडीए का नॉड मिल गया है पैमेरोडोनिट डिसोडियम के लिए। एनएमडीसी ने एक अपडेट दिया है कि वो डीमर्जर है नगरनार स्टील प्लांट का वो कंप्लीट करेंगे Q2 फाइनेंशियल ईयर 23 तक। और उनके एमडी ने बोला है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये डीमर्जर 3 मिलियन टन्स इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है नगरनार का वो कंप्लीट सेकेंड क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 23 में होगा। बट उनके चेयरमैन है उन्होंने रिफ्यूज किया जो गवर्नमेंट का डाइन्वेस्टमेंट का जो प्लान है प्लान के बारे में उसकी डिटेल देने के लिए। नेक्स्ट अपडेट है हैप्पीएस्ट माइंड कंपनी है। उन्होंने अनाउंस किया कि वो लॉन्च करने वाला है एंड टू एंड सिक्योरिटी सर्विस फॉर हेल्थ केयर सेगमेंट के लिए। एपीबी इंडिया है उसके ऊपर एक अपडेट है आंध्रा पेपर लिमिटेड उन्होंने डिप्लॉय किया है कि एबीबी इंडिया का जो एडवांस प्रोसेस है जो कंट्रोल करती है ऑप्टिमाइजिंग लिंक और क्लीन प्रोडक्शन। जो ब्रिगेड इंटरप्राइजेस है उन्होंने स्टेट ऑफ द आर्ट सस्टेनेबल आईटी सेल्स पार्क है ब्रिगेड टेक गार्डन्स का उसका इनॉग्रेशन किया है। डीसीएम श्रीराम लिमिटेड है उन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया है रिन्यू पावर के साथ जो सेटअप करेंगे 50 मेगावाट हाइब्रिड विंड सोलर पावर प्रोजेक्ट। और ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगी गुजरात में। एक्सिस ने टर्मिनेट किया है डील जो है उनकी एंटायर स्टेक जो सेल होने वाली थी यूके यूनिट के साथ और वाइंड अप किया है सब्सिडरी। लास्ट अपडेट आरईसी के ऊपर। आरईसी ने सैंक्शन किया 2000 करोड़ फॉर जो क्लीन आउटस्टैंडिंग ड्यूज है डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस के रिगार्डिंग झारखंड राजस्थान छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर में। और ये स्टेट्स है वो क्लियर करेंगे ड्यूज और ये जनरेशन कंपनीज जो है और ये इंटरस्टेट जो ट्रांसमिशन है उसके लाइसेंस और इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग लाइसेंस है उसके लिए। और आरईसी प्रोवाइड करेंगी फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर लेट पेमेंट जो सरचार्ज है उसके अंडर।
और एक ये है कि गवर्नमेंट इशू करेंगी एलपीएस रूल टू, जो ये अभी सपोर्ट करेगी उनके लिए जो डिस्कॉम जो क्लियर माउंटिंग व्यूज है जेनिकोज और ट्रांसमिशन कंपनीज के लिए. सो दैट्स इट फ्रॉम आर एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द कॉन कॉल. हैव अ नाइस डे.